In this lesson, we are going to start with problem solving and design using flowchart and comparison of flowchart and pseudocode of any algorithm, how to convert an algorithm using a pseudocode or a flowchart. An algorithm set out the steps to complete a given task. Anyone who studies the flowchart or algorithm should be able to work out the purpose of the task. ऐसे ही ना, if I just design an algorithm step by step मैं algorithms create कर दूं, मैं directly फिर उसके बाद program create कर सकता हूँ, program का code मैं बना सकता हूँ. या अगर मैं कोई path आपको diagram दे in diagram form दे दूं, तो you will know कि अच्छा पहले मुझे ये करना है, then this the first step, second step, third and fourth. It will be easy for me to understand. Or you can say an example, your GPS system, it gives you a roadmap. Okay, this is your start and this is your this is your start and this is your stop. Now, if you want to follow this path, if I gave you in a diagram form, it will be easy for you to understand मुझे कहाँ जाना है in a quick way. If I give a list of instructions मैं आपको दे दूँ, instruction 1, 2, 3, 4, 5, आपके लिए instruction is going to be the best or the diagram to understand a problem, which will be Yes, easy to sir. understand. The diagram will be easy to understand or the list. Sir, obviously your flowchart diagram. Yeah. Okay, so that's why developers sometimes needs diagram or of an algorithm or in a form of a chart, so they know what are the steps to be conducted in an easy way. So every developer is not doing the developing in the same language. Python में वो सारे नहीं कर रहे होते, कोई PHP पे कर रहा होता है, कोई C++, Java and so on. तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए we use it. Now, if I go with making a sandwich traveling to a workstation, अगर मैं उसको step by step algorithm में design करूँ तो it will be easy for me. I'm not going to for this activity. This is actually not for you. Now, pseudocode, we have done this in a simple method of showing an algorithm using English-like words and mathematical operators that are set out to work like a program. Have a look at the pseudocode for the checking for an alarm system. So repeat until is doing what? Wait till 10 seconds, get the time, and until time is equal to, sorry, this is coming from here. Until the time is this, it will go back after every 10 seconds, get the time and see. If the time is this, true, it will out and sound alarm. Now, let's go with flowcharts. Pseudocode and a flowchart. This both are representation of your algorithm of any problem. देखिए कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसे या सूडो कोड में लिख लें या फ्लो चार्ट उसका क्रिएट कर लें. Then you can execute your program. Now, what is a flow chart? It is a structure diagram. It's a diagrammatically step required to perform a subsystem and the other that they are to be performed. Now, these steps together with the order, remember, order are called as an algorithm. Flowcharts are an effective way to communicate the algorithm that shows how a system or subsystems are working. तो ये subsystems का further जब मैंने भी आपको बताया functions procedures करेंगे तो उसमें आएगा. अभी just we'll follow the mean algorithm. Construct flowchart for the checking for the alarm time system or subsystem. अब एक अलार्म का हम flowchart बनाते हैं. अभी तो हमने structured diagram बनाया था. अगर मुझे flowchart बनाना है, so what will I do? I will start. This is the subsystem. This is your subsystem. ये क्या कर रहा है? Get time ले रहा है. So it's actually a function जो कि get time ले रहा है. और अगर वो time मिल जाता है within 30 seconds, ठीक है? So if it's get time is not within 30 seconds, so no, it will get the time and get back. It's a loop. So every second, 30 seconds वो time get कर रहा है. और is the time is equal to alarm time. अगर वो alarm time के equal है तो वो sound alarm कर देगा और end कर देगा.
Now flowcharts has some symbols. अभी स्ट्रक्चर डायग्राम किया तो स्ट्रक्चर डायग्राम में हमने क्या किया, हमने स्टेप बाय स्टेप जो भी डिटेल सी, इट वाज इन डायरेक्ट और रेक्टेंगुलर शेप. बट हम फ्लो चार्ट के लिए कुछ सिंबल्स यूज करते हैं. फर्स्ट सिंबल जो फ्लो चार्ट में यूज होता है, दैट इज एन बिगिन एंड एंड, और यू कैन से अ टर्मिनेटर. दिस इज द सिंबल, राइट, टू स्टार्ट एन एल्गोरिथम. ये अभी मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया है, ठीक है, ये देखें. तो अगर मैंने कोई भी एल्गोरिथम स्टार्ट करना है तो दिस इज द वे, दिस इज, और उसके बाद एरो नीचे को फ्लो करेगा. And when my program is going to end, I'm going to finish this following with the arrow downwards in a hierarchy, in a top-down design. So ये मेरा end, this is my end, and going down. ठीक है? This is known as the first symbol. ये आपका first symbol है flowchart का. Then we have another symbol. This symbol is a process. जब हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं किसी वेरिएबल में, असाइनमेंट, और कोई हम फॉर्मूला यूज करते हैं, सपोज ए असाइन ए प्लस बी, ठीक है. सो दैट इज आल्सो इन अ रेक्टेंगुलर शेप. दिस इज नोन एज अ प्रोसेस. इस सिंबल को हम प्रोसेस कहते हैं. अब एरो इज कमिंग इन एंड इट इज गोइंग आउटसाइड. एंड अगर हमने कोई वैल्यूज इनपुट in a pseudocode या output करनी है, when we are working with input or an output, we use this parallelogram shape. ठीक है. तो अगर हम कोई आउटपुट मैसेज भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम आउटपुट x, उसके लिए भी हम an arrow coming in and an arrow going out with this parallelogram shape. ठीक है. Then we have flow line. Flow line, this flow line already tells, which shows the flow of the algorithm. The last one is this one, diamond shape. This is called decision. Decision means when you're using if condition or loops structures, इसके अंदर conditions use होती हैं. So these are used for conditions, right? So इसमें आपका flow एक in होता है और it is taking out two outputs, two flows outside. One is for yes and one is for no. ठीक है. So ये हमें साथ mention करना होता है इस डायमंड के अंदर कि आपका फ्लो आ रहा है और जो एक आउट जा रहा है वो यस के लिए जा रहा है, यस वी हैव टू राइट यस, एंड एक नो के लिए जा रहा है. अभी हम एक फ्लो चार्ट डिजाइन भी करेंगे, उसमें और क्लियर होगा हम एल्गोरिथम को कैसे डिजाइन करते हैं, राइट. सो दीज आर टोटल सिंबल्स जो कि आपके इस पे यूज होते हैं. एक और सिंबल यूज होता है दिस वन, ये जो अभी मैंने आपको इन रेक्टेंगुलर के अंदर, इस रेक्टेंगुलर के अंदर आपकी डिवीजन हुई है. लेट मी शो दिस लाइक दिस, ये वाला, ठीक है. दिस इज यूज फॉर योर सब सिस्टम. एक प्रोग्राम के अंदर आपका कोई सिस्टम या फंक्शन यू कॉल हो रहा है और योर प्रोसीजर इज बीइंग कॉल्ड, तो उसके लिए वी यूज दिस सिंबल. ठीक है. तो ये भी आपको याद रखना होगा, आगे हम फर्दर इसकी वर्किंग करेंगे. सर तो ये प्रोसेस के लिए भी है, असाइनमेंट के लिए नहीं, प्रोसेस और असाइनमेंट के लिए सिंगल, सिर्फ दिस इज द रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल यूज होता है. दिस इज फॉर फंक्शन एंड प्रोसीजर. ये वाला जो सिंबल है दिस वन इस फंक्शन प्रोसीजर, रेक्टेंगुलर के साथ दो कट्स लगे हुए हैं, ठीक है, इनसाइड. ओके सर. सपोज मैं कहता हूँ x int y, ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट अ प्रोसीजर, सॉरी अ फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड. तो ये किसके अंदर जाएगा, रेक्टेंगुलर के अंदर नहीं जाएगा. ठीक है. उसके लिए मुझे ये सिंबल यूज करना होगा, रेक्टेंगुलर विद टू कट्स. ये वाला सिंबल, वन इन और वन आउट. करेक्ट. लेकिन अगर सिर्फ फॉर्मूला है x असाइन a प्लस b या x असाइन 0, तो वी आर गोइंग टू यूज रेक्टेंगुलर. दिस एग्जांपल is for taking two inputs and finding which is the largest input number. Now, in a simple algorithm, अगर मैं simple algorithm की बात करूं, now in this, अगर आप इस algorithm को देखें, now this simple algorithm is doing what? Start, find the largest number from the values. Now values are two values which need to be input. Take variable,
number 2 and this is number 1. Number 1 and number 2. Enter the value in num1 and num2. Then if num1 is greater than num2, then print num is greater, else print num2 is greater, and end the program. Now this is simple algorithm. If we work with pseudocode, we have done this pseudocode. What will do? I'll take an input num1 and num2. उसके बाद I'll use an if condition. If num1 is greater than num2, then do what? Num1 is largest. Else, if it is false, else num2 is largest, and program end. Now this is my pseudocode of this algorithm. If I need to create its flowchart, step by step, मेरा सबसे पहले क्या आ रहा है? Input num1 and num2. पहली condition यही है ना? पहली sequence statement. What will I do? I will start creating by start symbol. Yes, start symbol with arrow going down. Start. Then we'll just go with input commands num1 and num2 in a parallelogram, right? तो मैंने आपको बताया था input या output हम parallelogram में use करें. Then we have if condition. If condition मैंने क्या कहा था? If हो, loop हो या case condition हो, we'll use this diamond shape. Flow में आएगा, condition हम लिखेंगे. What is the condition? Num1 is greater than num2. If condition is yes, it will go to this path. If the condition is no, it will go to this path. Now, if the condition is true, what is it doing? Outputting print output. So, if the condition is true, yes, आपके flow में क्या आएगा? ये output. So, it's an output in a parallelogram shape में आप दे दो और arrow going down. If the condition is false, no, तो आप output ये दे रहे हो. So this is the output. No. और उसके बाद क्या हो रहा है? If condition के बाद प्रोग्राम एंड हो रहा है, एंड इफ पे आ रहा है. तो इसका मतलब अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो प्रोग्राम कहाँ जाएगा? डायरेक्ट एंड सिंबल पर चला जाएगा. अगर प्रोग्राम नो कर रहा है तो ये भी क्या करेगा? यहाँ से डायरेक्ट एंड पर चला जाएगा. Getting this? How a flowchart is Yes, sir. being created. ठीक है. हम flowchart को loop structures के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं? Suppose this is my loop and this loop is a for loop. और for loop मेरा क्या है? 0 से 9. It is outputting this message 10 times, right? Or it is ending. This is my code. ये कोड है. अब इस कोड को अगर मैंने इसका flowchart बनाना हो, तो what will I do? मुझे क्या करना है? सबसे पहले let's go down. I will start my program. ये किसके लिए? 4 के लिए. So 4, so we have counter 0 to 9 और print command है static और इसके बाद we have next counter. ये मेरा कोड है. You will draw the start symbol. जो एल्गोरिथम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहले क्या हो रहा है? for loop यूज हो रहा है. लेकिन for loop के लिए आपको याद होगा 4 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं. इफ यू नीड a variable, initial value, final value and increment. ठीक है. अब फ्लो चार्ट में हम इस तरीके से नहीं यूज कर सकते. वेरिएबल को हमें इनिशियली पहले असाइन करना पड़ेगा इनिशियल वैल्यू. ठीक है. सो काउंटर में हम क्या करेंगे? 0 है. और उसके बाद ये लूप कहाँ जा रहा है? इनसाइड. क्या कर रहा है? आउटपुट प्रिंट कमांड कर रहा है स्टैटिक. ठीक है. और उसके बाद ये नीचे आ रहा है नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट पे क्या कर रहा है? इंक्रीमेंट कर रहा है. तो इंक्रीमेंट के लिए मुझे इंक्रीमेंट पूरी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी. इट विल गो बैक. यहां से नेक्स्ट से दोबारा लूप में आ रहा है. अब वो कंडीशन चेक करेगा क्या ये इक्वल टू 9 और इक्वल टू 10 या ग्रेटर देन 9 है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे उसका डिसीजन लेना पड़ेगा. अगर काउंटर इज इक्वल टू 10 हो गया है तो वो क्या करे? लूप ब्रेक कर दे और प्रोग्राम एंड कर दे. अगर नहीं तो वो दोबारा जाए कौन सी कंडीशन में? इनसाइड दिस कंडीशन प्रिंट आउट में. तो वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा? यहां से ये वाली कंडीशन में आना है. तो इससे ऊपर वाले एरो में इसको फिट इन करना है. गॉट इट? कि फोर लूप का कैसे बनेगा? फोर लूप के लिए याद रखिएगा जो भी डिसीजन होगा वो एंड पे होगा. हियर पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, इंक्रीमेंट भी हो जाएगा,
इसका असाइनमेंट भी हो जाएगा और यहाँ पे होगा। रिपीट अंटिल में अगर यही चीज हमें करनी हो तो व्हाट विल डू, counter variable initial value, start with repeat print, and we will have increment and until command, until greater than this। अब कंडीशन क्या है, ये है। और कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ब्रेक होगा, पॉज होगी तो रिपीट में जाएगा, और रिपीट के बाद किस कमांड में, इसी कमांड में एरो आएगा। तो मोस्टली आपका दोनों रिपीट अंटिल और फोर लूप का जो फ्लो चार्ट है सेम ही बनेगा, लेकिन क्या होगा, सिर्फ कंडीशन चेंज होगी। वो इक्वल टू या ग्रेटर देन था, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन, नो एंड गो बैक, ठीक है। अदरवाइज लूप फ्लो चार्ट सेम वैसे ही बने, ठीक है। और रिपीट अंटिल का भी डिसीजन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स इनसाइड, जितना भी लूप का स्टेटमेंट्स होंगी उसके बाद ये यूज होगा, करेक्ट। यस सर। अब यही चीज अगर वाइल में करनी, तो वाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है, और अगर कंडीशन ट्रू हो तो इनसाइड लूप जाता है, और अगर फॉल्स हो तो ब्रेक लूप करता है। तो पहले क्या होगा, स्टार्ट प्रोग्राम, ठीक है, और स्टार्ट प्रोग्राम के बाद आपकी इनिशियल वैल्यू असाइन, और इसके बाद डाउन डिसीजन में आएगा, इज इट लेस देन 10। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, हम यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं लिखते, यस एंड नो लिखते हैं, ठीक है। अगर ये यस हो रही है तो ये प्रिंट करे, इंक्रीमेंट करे, और दोबारा फ्लो कहाँ चला जाए, डिसीजन पे चला जाए। क्यों, क्योंकि वाइल क्या करता है, जब एंड वाइल के बाद जाता है तो दोबारा यहाँ पे आता है डिसीजन पे। तो मेरा ये फ्लो दोबारा अगर रिपीट करेगा तो कहाँ आएगा, इट विल गो बैक टू द डिसीजन। तो ये मेरा एरो इस एरो के साथ यहाँ अटैच होगा। हम यहाँ से इन नहीं करेंगे, ऐसे इन नहीं करेंगे, हम पूरा उस एरो के साथ एरो को अटैच करते हैं। That's all for now. Enjoy learning. Like, subscribe, share. Allah Hafiz.